Hello everyone, I am Sudhakar. In this video, we will talk about the placement opportunities available for the MTech students of Systems and Control Engineering at IIT Bombay. For our viewers, Systems and Control Engineering is more popularly known as SysCon. SysCon was formed in 1977 and it is a unique interdisciplinary program in the country that offers postgraduate education in the broad area of systems and control. For more details, you can visit the link given in the description of the video. For today's discussion, we have three final year MTech students from SysCon. Let me begin with their introduction. First, we have Harsha Priyanka. In the recent campus placement season, she got placed in Qualcomm. Next, we have Anshuman Sharma. He got placed in General Electric, also known as GE. Last but not the least, we have Sushant Suryawanshi. He got placed in ZF India. Thank you, Anshuman, Harsha, and Sushant for joining us today. So I know about the companies in which you guys have been selected or the job have been offered to you guys. I would like to know more about the profiles, like Harsha Qualcomm में हुई या अंशुमन जी में हुआ, सुशांत तुम्हारा सिलेक्शन ZF इंडिया में, तो profiles के बारे में I would like to know a bit about the profiles. So we can begin with Anshuman. Anshuman, could you please elaborate a bit about the profile in G जहाँ जिसमें तुम काम करोगे? Thank you, sir. Thank you for having us here. So I have been placed in General Electric and I have been selected for the role of Addition Engineering. Which is under the program called EEDP, which is Addition Engineering Development Program. So under this program, like along with the work, we'll be trained for around 1.5 year or 2 years, and after that, we'll be allocated to one of the businesses of GE, which is either aviation, renewables, or healthcare. So this is the basic profile, and this profile is a mix of core plus analytics, as I have been told in the interview. So let's see. Yeah, so somewhat your job is like core, like the things which you have studied in your masters, उसका कुछ ना कुछ application होगा. और जितना for our viewers, systems and control के students हर साल 2 students GE में place होते रहे हैं, जितना हम जानते हैं past statistics के हिसाब से. Yeah, we will talk more about your journey, but before that, I would like to talk to Harsha. So Harsha, तुम्हारा profile, like what is your profile in Qualcomm? तुम्हारा वहाँ पे क्या job description, job role कैसा है, क्या है? So the job description, job profile was multimedia systems engineer, and then job description में तो they have written like I will be working something on like algorithms of developing algorithms of computer vision and then video processing, image processing. So basically we need to, I think they are they want to create some optimized algorithms, computer vision algorithms for mobiles, Qualcomm wale. So that is like the profile that they have mentioned. But then I think I'll be going into the XR team basically once I join. This is what XR is like basically extended reality. So it is basically culmination of augmented reality and virtual reality. So I don't know what exactly of the products that I'll be working on, but they told that I'll be into the XR team. So okay, great, yeah. कुछ भारी सा बहुत भारी काम है, अच्छा ही होगा. थोड़ा fancy है, like सुनने में तो fancy है. Yeah, coming to Sushant. So Sushant, ZF India में तुम्हारा क्या प्रोफाइल है? तुम्हारा वहाँ पे क्या कुछ डिस्क्रिप्शन क्या है वहाँ पे? So I've been placed in ZF India Technical Center in Hyderabad, and I've like my profile which they mentioned in the JAS was the senior engineer in artificial intelligence and machine learning. So ZF is it provides automobile solutions to the giants which are currently working, like Mercedes, BMW, and all this. It's a European country, the German company. So right now they are working on the cutting edge technologies also, like ADAS, autonomous driver assistance systems, and self-driving car algorithms also. So I'm not sure in which place in which domain I will be posted. But yeah, my work is mainly on the ML to develop the ML algorithms and in R&D sector. Okay, yeah, R&D ML, yeah. So ML भी आजकल बहुत बड़ा buzzword है these days. सब लोग ML DL की बात करते हैं. हर कंपनी में almost ML DL के मतलब काम हो ही रहे हैं. तो yeah, it's really good. So like from your guys, like this जो description तुम लोगों ने दिया, I can conclude कि somewhat मतलब बहुत diverse placement हुआ. Like अंशुमन जी में गया जो कि ये core form है systems and control के लिए mainly. फिर हर्षा प्रियंका मल्टीमीडिया में गए जिसका एटलीस्ट और XR में जैसा उसने बताया, तो मुझे लगता है कि ये बहुत लाइक
it is like control से कोई लेना देना ज्यादा नहीं, मतलब दूर है, like it's a bit different from control what she would have studied. फिर सुशांत ML में गए, MLDL में गए, तो like then we can say कि like systems and control के लोग they can go places, मतलब कहीं भी जा सकते हैं, like जैसे कि तुम लोगों ने किया. और सो तुम्हारे बैच के लोगों का कैसा रहा, इफ यू कुड टॉक अ बिट अबाउट की प्लेसमेंट, तुम्हारे बैच के लोगों का या तुम्हारे फ्रेंड्स जो इस तुम्हारे साथ पास आउट उनका कैसा रहा प्लेसमेंट्स? Actually, some of our batchmates are already or are placed in like companies like TSMC for the role of data engineer, and one has been placed in Micron for the role of metrology engineer, Micron Singapore, and one got placed in TVS Motor for control related profile. Yeah, so it's a bit diversified. This. Yeah. You want to add something, Sushant, to this? Yeah, I mean, add करने की इच्छा है इसमें? And also 2 of our batchmates are also placed in MathWorks. Okay, yeah. MathWorks India, yeah. Good to know. Yeah, I am also in MathWorks, so I can relate. yeah. तुम लोगों को, do you guys want to add something, Harsha, Priyanka and Sushant? कुछ तुम ऐड करना है इसमें? नहीं. These are like, we are like only some 10 people are there in that event, so everyone went into very different diverse profiles actually. So basically वही TSMC usually वो electrical लोगों के लेके जाती है, but then this time like first time like SysCon guy like went into TSMC, and then also like Micron also. Yeah, and that is in Singapore, like not in India. Exactly. Yeah. So I think इस बार like India और मतलब like TSMC ताइवान में हो गया और Micron सिंगापुर में, so like SysCon के students they got placed I think at least in these countries like India, then Taiwan, followed by Singapore and so on. Yeah. And जैसा अंशुमन ने और तुम लोगों ने ही बताया कि like 5-7 कंपनी के तुम लोगों ने नाम नहीं लिया, like MathWorks, Micron, TSMC, ZF India, Qualcomm. So I think इस बार मुझे लग रहा है हर स्टूडेंट एक अलग अलग कंपनी में गया क्या? 10 स्टूडेंट 10 कंपनी में गए क्या, ऐसा हुआ क्या? Yeah, kind of. Yeah, so we got to know कि बहुत सारी कंपनीज में लोग गए, and like 10 students SysCon is, we know that it's a very small group of master students, so but सबको काफी like unique opportunities मिली in India and in foreign countries as well, like Taiwan, Singapore and so on. Okay, so like फिर like given that कि SysCon like it's about systems and control, mathematics पढ़ना होता है, control की courses, so how did you guys manage your placement कि इतने varied profile के लिए तैयारी फिर कैसे की? So like जैसे अंशुमन तो खैर कोर में गया, तो I can say कि ठीक है उसने कोर की चीजों को पढ़ा होगा कुछ हद तक. Of course you would have studied a lot of things different apart from core as well, but फिर भी तैयारी कैसे की तुम लोगों को? If you could talk about, I would like to start with Harsha Priyanka, given that she got placed in Qualcomm, which is like far from systems and control. तो तुमने कैसे तैयारी की like अपने placement के लिए, और कब जगे तुम placement के लिए, कब वो जज्बा आया? Actually I was up APC, मतलब placement team में काम की मैंने. Then like we realized the gravity of that placements here at IIT Bombay. So we kind of started like मेरा tenure खत्म होने के बाद ही we were like kind of serious like अच्छे से करना in the courses. To be honest, like placements में resume plays a very important role. So for that we need to be resume ऐसे shape करना है so that they should be knowing that we have worked in these particular profiles. So for that reason मैंने courses लिए कुछ. I was like a little bit interested in signal processing, तो मैंने similarly something related to speech processing, which is under like Leena Vachani ma'am. And then उसके बाद I took a course in computer vision. Like actually मैंने speech का एक course भी किया. And then I did a course in computer vision. And then a little bit of interest towards robotics, तो मैंने robotics का भी एक course किया. We were like all those we used to have course projects in those in that particular courses. So वो सब करके like I kind of built my resume in this domain. So and also machine learning. So यहाँ पे like in IIT Bombay everyone does machine learning, but you should be also doing courses which have like applications of machine learning. Application, yes. So because like if you are doing a machine learning course, everyone here is doing machine learning course, but then like you need to have a edge on from others. So uske liye like you need to explore like even more in depth. So problem hoti if you do only a basic course, it's not going to take you anywhere. तो थोड़ा DL भी करना पड़ेगा,
and if you are like very specific, if you have specific with the role, like मेरे को इसी में जाना है, तो you should be working upon those particular courses. Yeah, I think you made a very strong point over here कि बस basic courses करने से that might not be so effective. It's better to basic course करो and then do some courses which talks about their applications. Like for example, machine learning, deep learning तो करो, but फिर जैसे तुमने computer vision के courses किए, you did your seminar on speech processing and so on. So I think like courses, the way you plan courses, उससे आपका resume strong हो ही जाएगा, no doubt. और जितना तो yeah. So point है, no doubt. So I think this should also send a message to our upcoming students कि how they plan their placements. और ये अलग बात है कि हर्षा प्रियंका और अंशुमन दोनों प्लेसमेंट सेल में थे, तो दे डेफिनेटली उनको पता था प्लेसमेंट कैसा होता है, बट फिर भी सुशांत नहीं था प्लेसमेंट सेल में, बट स्टिल ही गॉट इनटू एमएल. तो ठीक है, प्लेसमेंट सेल में होना इंपॉर्टेंट है, बट ऑफ कोर्स द वे यू प्लान योर रेज्यूमे वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. हम कोर्सेज कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. तो एमएल का जैसे हर्षा प्रियंका ने बताया, और एज वी नो कि सुशांत भी जेडएफ इंडिया में एमएल के लिए की शॉर्ट के लिए सिलेक्ट हुआ है. तो सुशांत, व्हाट इज योर लाइक, हाउ डिड यू प्रिपेयर योर फॉर योर प्लेसमेंट? तुमने कैसे प्लान किया चीजों? So basically I was focused on the robotics profile because I was interested, and the motive behind taking SysCon was the robotics itself. So I tried a subject in second semester, and then also I went to national level competition in robotics to improve my knowledge and gain the skills. And for backup, I also did some online courses in the field of ML, machine learning. And in my odd semester, that is my third semester before placement, I took a course in the GNR department, CSRE department, on deep learning. So I have a profile in both robotics as well as in ML also. So that's how I prepared. I mean, and also I in summer I made some projects on myself, by myself. So I like before placement also itself, I know that the courses does have value, but more than courses, the projects hold more value. So that's why I was more focused on doing more projects. So that's why I also did some projects, and which I mentioned in my resume. So I have both kind of profile, like robotics as well as ML. So like तो आई थिंक यही तरीका है कि कोर्सेज और प्रोजेक्ट्स इतने कर लो कि सो दैट कि यू कैन शो कि आपने इस एरिया में काम किया है. और आई थिंक सुशांत के केस में एक ये भी काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ही वाज हैविंग रोबोटिक्स एज द फर्स्ट चॉइस वी कैन से, और फिर बैक ऑफ द माइंड ये था कि ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो आई कैन ऑल्सो अप फॉर एमएल प्रोफाइल्स. सो आई थिंक ये भी काफी अच्छी स्ट्रेटजी दैट यू हैव plan A then plan B. If that does not work out, then of course you have plan B. So ये भी एक सही तरीका है. You can have these things in your mind. और जितना मैंने देखा है और तुम लोगों ने भी देखा है कि IIT बॉम्बे के प्लेसमेंट में you get a wide range of opportunities. तो ये अब आपके हाथ में कि how you grab those opportunities, ये बस आपके हाथ में. तो like हमने even ML the के बारे में courses also, like even जो courses हमने लिए थे, हमारे डिपार्टमेंट के कोर्सेज लाइक प्रॉपर कंट्रोल पे ही होते हैं, बट देन द कोर्सेज दैट वी टुक कर फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट. सो आईआईटी गिव्स दैट फ्रीडम टू यू टू एक्सप्लोर लाइक इन विच एवर फील्ड यू वांट टू गो. वो फ्रीडम मिलती है तुम लोगों को. सो यू कैन टेक वेरियस कोर्सेज फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट. लाइक आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप का भी लाइक कुछ कर रहा है कोर्स, लाइक सुशांत ने भी. सो अभी सो लाइक यू कैन एक्सप्लोर एवरीथिंग यहाँ पे. या बिल्कुल सही बात है. आई थिंक ये आईआईटी का एटमॉस्फेयर, रिसोर्सेज, फैक्ट लाइक सुशांत प्रोजेक्ट कर रहा था तो उसको प्रॉफ का सपोर्ट था उस प्रोजेक्ट के. आई थिंक वो लोग मेंटर थे ना सुशांत तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए, तुम्हारी लीना मैम थी, राइट? हाँ, तो सपोर्ट मिलता है फैकल्टीज का, प्लस द फ्लेक्सिबिलिटी कि यू कैन चूज कोर्सेज फ्रॉम एनी ऑफ द डिपार्टमेंट्स. आई थिंक सीएस, इलेक्ट्रिकल, जीएनआर, कहीं से भी हम लोग जाके कोर्स कर सकते हैं. केमिकल, सब जगह हमारे लोग जाते हैं कोर्स करने. तो दैट इज द आई थिंक ब्यूटी कि यू कैन शेप योर जर्नी. अब बस आपके हाथ में कितना आप कर सकते हो, कर लो. आपके हाथ में मौके आपको सारे मिलेंगे. It just depends upon your interest. तुमको जो करना है वो करो. No one is going to stop you. और कुछ लोग प्लान ए प्लान बी सब कर लेते हैं. सुशांत ने प्लान ए प्लान बी समर सब कुछ नहीं छोड़ा उसने. तो अगेन ये भी एक तरीका है लेकिन जो पकड़ना था वही छूट गया. अरे तो दैट्स व्हाई प्लान बी ऑलवेज कम्स इनटू प्ले ना, कि चलो ये नहीं हुआ तो ये सही है, एनीवे यू आर हैप्पी. सो ठीक है, हमने नॉन कोर की बात करते करते हम लोगों ने कोर को तो अंशुमन को हमने साइड ही कर दिया. बट या विल टॉक अबाउट कोर नाउ. अंशुमन ने लाइक हाउ डिड यू प्लान, लाइक तुम्हें कैसे लाइक कोर की तैयारी तुमने कैसे की? ये दोनों ने तो नॉन कोर या एमएल, नॉन कोर क्या बोलना है, एमएल बोलना है. एमएल के लिए लोग थे, रोबोटिक्स के लिए सुशांत को सतर्क था. तुमने कैसे किया कि मुझे जी में ही जाना है या कंट्रोल के फील्ड में जाना है? तुमने कैसे पढ़ाई लिखाई की, कैसे प्लान किया? So I was like preparing equally for the core and non-core, and I was also preparing for the
like not as a backup, like as an equal for data science MLDL also. So I also took courses from GNR department, electrical department related to machine learning, and like we took courses from Coursera and other like online platforms to do the projects related to ML and DL. And along with that, like we also took a course which is the advanced process control from chemical department, which helps us in building the core profile. So I was like both into core and non-core, and since GE was in my list, so and it visits the IIT Bombay on day one, so fortunately I got placed in that. Yeah, so that's why, like and also I would like to add. सबका plan भी है. Yeah. And also like it's not like we'll only placed will be only placed in core and non-core only, but like if the students want to target companies like Texas Instruments or Intel also, so it's not like we are not even shortlisted for that. We were shortlisted for these companies, and the I want to emphasize on the fact that since most of the students will be having the background from electrical engineering, so these companies like Texas Instruments, Intel Corporation, so they ask questions from digital electronics and microprocessors. So like if you will be ready with the concepts, basic concepts of digital electronics and microprocessor, then it will be really helpful for clearing the test. Yeah. So definitely. This is the part. And also कोविड के टाइम पे सब लोग वैक्सीन ढूंढ रहे थे, तुम लोग बस बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, लाइक कि बस प्लेसमेंट के लिए रेज्यूमे बनाओ, प्रोजेक्ट करो, ये करो, कोर्सेरा पूरा मतलब लोग वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, तुम लोग यहाँ पढ़ाई में लगे थे. डरा दिया तो सीनियर्स ने, तो करना ही पड़ा. And the main point also, main thing ये था ना, like from the process of building the resume and like reviewing our resumes from the seniors, it was the most important step. And like some seniors were always there for us, and specifically Sudhakar sir was always there for us. So like he was very helpful anytime. So like he helped us a lot. Actually like choosing the videos and हाँ वीडियोस भी हमने यूज किए. Really, वो वीडियोस हम हमारे लिए भी यूज किए. And not only through videos, like from like on Zoom and Google Meets also. Personal, like in the personal meets also. So he was very helpful. So like you should be very interactive with your seniors also. Like since they have already been through this placement season, so like they will really help you, and they will like give you a good review of the placement season. So yeah. अब यहाँ मैं थोड़ी खुद की तारीफ करूँ, सुधाकर मैं ही हूँ. वही मैं बोल रहा हूँ, ये ऑकवर्ड हो रहा है. थोड़ी खुद की तारीफ कर लेता हूँ. Okay, let it be. Yeah, so of course ये सारी चीजें काफी इम्पोर्टेंट है कि लाइक प्लान ए प्लान बी का होना, कोर्सेज प्लान करना, और इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं और IIT बॉम्बे प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज. जैसे मुझे पता है कि कोर्सेरा वगैरह के उस टाइम कुछ फ्री एक्सेस आया था, कुछ कोर्सेरा प्रोवाइड करे थे, कुछ IIT बॉम्बे या कुछ ऐसा कुछ आया था उस टाइम पे. ऐसा कुछ आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं. एक IPI कोर्सेज होता है ना, लाइक देयर इज वन IPI कोर्सेज. कुछ था ऐसा, तो LFID, so we can freely choose one on Coursera. Like student account. Yeah. Right. और EDX का भी कुछ, उनका भी कम हो गया उस टाइम पे. सही बात है. EDX का भी कुछ कूपन वगैरह आया था हमारे कोर्सेज में, बहुत सारी चीजें आई थी. तो आई थिंक IIT Bombay provides you all the resources. It's just like it depends on you how you manage those things. बस आपको यूटिलाइज करना रिसोर्सेज को अच्छे से. And of course, so we can conclude from this discussion कि placement जैसे like मुझे बहुत लोगों ने अभी reach out किया था कुछ दिन पहले कि systems and control में placement opportunities क्या हैं, given that we will be studying about systems and control only, तो क्या है. But I think placement depends on is in your hands only. Systems and control है, control चीजें पढ़ोगे ही पढ़ोगे, but like हर्षा, प्रियंका, सुशांत, इन लोगों ने जैसे पूरा हट के काम किया, मतलब पूरी चीजों को तैयार किया. अंशुमन ने DS वगैरह की पढ़ाई की, डेटा साइंस सब कुछ पढ़ाई की. तो it depends totally upon you. And SysCon is not limiting your opportunities. In fact, it's enhancing your opportunities. की core भी है, ML भी है, data science भी, सब कुछ आपके लिए खुला हुआ है. जहाँ भी जाना चाहे आप जा सकते हैं. So and also one thing I would like to suggest to the juniors कि मतलब branch या मतलब placement देख के मत आओ, कोई branch choose मत करो. Just choose your branch based on your interest और तुमको future में career path कहाँ जाना है. Like career path तुम यहाँ के भी decide कर सकते हो. There are a lot of options.
बट एटलीस्ट तुम्हारे माइंड में एक बैकअप तो होना चाहिए, लाइक रैंडम नहीं आना कि हाँ चलो ये ब्रांच का प्लेसमेंट सही है देन वी विल टेक दिस, सो यू शुड नॉट डू दैट। बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है, क्योंकि And वही इंटरेस्ट पे also, क्योंकि I would like to add one more point. Like, don't take like placement as an ultimate goal. Like, just choose कि like तुमको कौन सा फील्ड में वर्क करना है. Because like मेरा like placement ultimate goal नहीं थी. मेरे को बस इंटरेस्ट था सिग्नल प्रोसेसिंग, तो इसीलिए आई एक्सप्लोर लाइक सिग्नल स्पीच प्रोसेसिंग एंड देन कंप्यूटर विजन में गई थी मैं इमेज प्रोसेसिंग केस में. But then eventually like opportunities will open up like if you just focus on your work. So I would suggest कि like placement don't have it as a like ultimate goal. वो तो मिल ही जाएगा, तुम IIT बॉम्बे आ रहे हो तो. I mean, it's not कि 100% मिल जाएगी, but you need to put your efforts. Yeah, you need to put your efforts, and then only you will land into the place where you want to. Exactly. जहाँ आपको मनचाहा प्लेसमेंट के you will have to fight. ऐसे तो बैठे बैठे नहीं मिलेगा. एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, लाइक जैसे तुमने बताया भी हर्ष, और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि मतलब प्लेसमेंट शुड बी एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू डू इन 2 or 3 years. इसको बाय प्रोडक्ट, आई थिंक किसी ने कहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये स्टेटमेंट, कि ये बाय प्रोडक्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वहां जाके भाई इतने लाख की जॉब तो लेनी ही, ऐसा नहीं होना चाहिए. यू हैव टू एंजॉय द IIT लाइफ, एंड IIT उस लाख 10 लाख से कहीं ज्यादा है. इट्स नॉट अबाउट मिलियंस, इट्स अबाउट अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. तो तुम लोगों को समझ में आ ही रहा होगा लास्ट टाइम, यू गाइस विल रियलाइज दिस वेरी सून कि कैसा लगता है कैंपस से बाहर आके. यू गाइस विल रियलाइज. So I really got to know about a lot of things from you guys, and yeah, it's good that you guys got placed in your at least plan A plan B companies. Like in case of Sushant, plan B हुआ but हुए place. ठीक है. तो एनी मैसेज, लाइक तुम लोग कुछ मैसेज देना चाहो अगले आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, लाइक कुछ वन लाइनर, कुछ बड़े TEDx टॉक टाइप कुछ बोलने की इच्छा हो, जो अगले अभी आने वाले लोग होंगे जो प्लेसमेंट्स में बैठेंगे या जो SysCon में एडमिशन का प्लान कर रहे हैं, यू हैव सम मैसेज फॉर देम. अंशुमन, शुरुआत तुम करो. तुम बताओ कि तुम बड़े थॉटफुल लग रहे हो. I would like to say only one thing, that as most of you guys must have gone through the stress of GATE examination, and after clearing that, you will be admitted into the prestigious IIT Bombay. So like after coming here, you will get to know like there is an ocean of opportunities which you will be feeling, and you will get to explore that. So it's a very good thing. So that's all. Like it's a very good option. Like not only like we have in our mind that give GATE and get into PSUs, but like from my own experience, like my thought process was also the same. But after coming here, I got to know that there is more than enough to the like the IIT tag and IIT Bombay specifically. Yeah, IIT Bombay has a lot to offer. हमने बात किया, it is a lot to offer. Means हमारे कैपेसिटी में नहीं है कि 2-3 साल में IIT पूरा जी सके. It's not in our possible ही नहीं कि 2 साल पूरा IIT जी सके. It has a lot to offer. Yeah. Also, I will say कि don't come to IIT just for placement. Come here for the exposure you get, the network you build, the people you interact with, right? You have a lot of things to learn, because I've interacted with a lot of PhD guys, even some BTechs in my competition team also. So they were like the people at another level, and you have to learn a lot of things from them. So come here for that experience and not for the money or some placement sake. That will happen if you work hard, but eventually that will happen. Keep in mind to come to IIT just for that exposure, to gain that experience, because it's once in a lifetime experience. You will never get the IIT life again, right? So yeah, come here for that. So मैं कुछ देर और ऐसे ही पूछता रहा, मैं रो दूंगा मैं कुछ देर में. I have already started missing my life at IIT Bombay. I will start crying then. Yeah, but you have made a very strong point, Sushant, here that कि भाई प्लेसमेंट के लिए मत आओ, और like the way you mentioned you have worked with BTech students as well. So ये अपने आप में एक अलग लेवल की बॉन्डिंग होती है कि BTech के लोगों को भी जानने का मौका मिलता है, और BTech के लोगों को जानने के बाद लाइक जैसे मेरे मन में एक ये था ग्रज कि I could not crack IIT when I was doing my like 12th के बाद क्रैक नहीं कर पाया, तो बहुत वो एक रहता है ना कि बीटेक करने की इच्छा थी, IIT से नहीं हो पाया. तो बट यहाँ के लोगों से मिलने में लगता है कि हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ हद तक लगता है कि ठीक है, एटलीस्ट भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो मिल लिया उन लोगों से, लगा कि हाँ ठीक है ये भी अपने जैसे ही लोग हैं. You get to learn from them and all. Yeah, no doubt, that's really true. So Harsha, like I would say कि like when you enter IIT Bombay, just like be open minded, like explore karo. There are lot many opportunities here at IIT Bombay, because like I have seen many people
when they joined MTech, they wanted to, उनके जो specialization थे उस पे काम करना चाहते थे, but then eventually once they started exploring the courses, तो eventually they did some other project, मतलब जो करना चाह रहे थे वो लोग पहले वो नहीं किए, they did some other like project, MTP project in some other fields. So I have seen many people जिन लोगों ने like power system से high and then they came into like communications, उसके बाद they built up their profile such that like पूरा deep learning machine learning में किए. So explore करो, and academic related भी like there will be many opportunities, like अभी पता चल रहा है हमको भी. So there are like so many opportunities, like पता ही नहीं रहता है तुम लोगों को. So just talk to people, get to know things here at IIT Bombay, and obviously the, like if you are like प्लेसमेंट के लिए तो सोचो ही मत, वो हो जाएगा, बट उसके लिए like अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट हो जाएगा. That will, yeah, the way अगर आप काम करते रहें चीजें अच्छे से तो वो हो जाएगा. That is of course a byproduct which we always say, वो हो ही जाएगा. Yeah, you guys have really made some strong points over here. I hope that will give an insight to the incoming students जिनको या तो एडमिशन लेने की इच्छा है या जो प्लेसमेंट के लिए सोच रहे हैं या जो IIT में जस्ट गए हैं, तो उनको एक आइडिया मिलेगा कि लाइक IIT इज नॉट अबाउट प्लेसमेंट्स, इट्स नॉट अबाउट जस्ट इंस्टीट्यूशन. वो एक, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, ये एक अपने आप में एक लाइफ देता है जो कि लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है. मैं खुद को अगर देखूं तो लाइक जब मैं गया और जब अभी तो लगता है कि हाँ ठीक है, आई गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम एनीवन. इनफैक्ट मुझे लगता है कि IIT में हर इंसान के पास कुछ ना कुछ सिखाने को है, बस आपके पास सीखने की वो टेंडेंसी होनी चाहिए. यू कैन लर्न, बीटेक हो, एमटेक हो, एमएससी हो, किसी से भी आप सीख सकते हो. सब लोग वहाँ पे मतलब दे आर कैपेबल टू टीच यू समथिंग और द अदर. कुछ भी हो सकता है वो. Definitely, yeah. So I guess we have covered the points, at least I have covered the points which I wanted to discuss, and that will definitely burst some of the myths which students are having. So yeah, so thanks a lot for sharing your views on the placement scenario in systems and control at IIT Bombay. Thanks a lot for your time. Thank you, sir. Thank you. Thank you for having us here. Thank you.